हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में अभिषेक जायसवाल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड आइकन में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे क्लिक करें और उसके बाद रिंग बेल आइकन को रिंग कर दें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। इस चैनल पे आपको अलग अलग तरीके के वीडियोस मिलेंगे, एजुकेशनल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, साथ ही साथ लाइफ हैक्स और इंटरटेनिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज हम बात करते हैं क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल के बारे में। सो दिस poetry part is composed by Vikram Seth in 1952 in Kolkata. So he was a great Indian novelist, and this poem is derived from his work Beastly Tales. Here is a poem and once upon a time a frog croaked away in a Bengal bog. Every night from dusk to dawn he croaked on and on and on. यहाँ मैंने वर्ड मीनिंग मेंशन कर दिए हैं, जहाँ बेंगल मीन्स है उस प्लेस का नाम, उस बॉग का नाम, और बॉग एक एरिया है जो कि बहुत ही मार्शी है। ऑन यहाँ पे पोएट ने रिपीट किया है टू मेक अ राइम क्लियर विथ डॉन, मेकिंग प्रीपोजिशन ऑन एज AWN, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, मीन्स फिगर ऑफ स्पीच, जो पोएट ने अपने इस पोएटिक लाइन्स में मेंशन किया है, लाइक एनोमोटोपोइया, रिपीटिशन, एंड रिपीटिशन में यहाँ पे लाइक ऑन एंड ऑन है। एंटीथेसिस है, मीन्स अपोजिट, डस्ट टू डॉन, एंड एलिट्रेशन है, बिंगल बॉग, रिपीटिशन ऑफ द लेटर बी इन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। सो जितने भी यहाँ फ्रेंड्स फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं उनके बारे में डिटेल्स में हम आपको वीडियो के लास्ट में मेंशन कर देंगे। So the story begins here. The poet mentioned about the story of a frog. एक फ्रॉग की और एक नाइटिंगेल की कहानी इस पूरे पोएम में है। तो ये स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक प्लेस द मार्शी लैंड नेम्ड एज बेंगल बॉग। यहाँ पे एक फ्रॉग जो रात से लेके मॉर्निंग तक लगातार कंटिन्यू क्रॉक करता है, अपनी आवाज़ निकालता है। एज फ्रॉग मेक कंटिन्यूअस वॉइस नॉन स्टॉप क्रॉकिंग. So to emphasize this, poet has used word on 3 times. Now second stanza, other creatures lost his voice, but alas, they had no choice, and the crass cacophony blared out from the sumac tree, at whose foot the frog each night minstrelled until morning night. So some meaning of the word here: loath, which is not interested or boring. Crash means insensitive or irritating. And here cacophony, unpleasant voice. And minstrel means upadhi. Now the literary devices used by the poet here. The rhyme scheme, that is very simple here. AA, that is wise, choice. Now BB, cacophony, sumac tree, phony, tree, and CC like night and night. Figure of speech, alliteration is used here, crash, cacophony, and it is a special figure of speech that is called epithet. It is mentioned by the poet in the lines, and the crash cacophony blared out from the sumac tree. Last one, antithesis used from morning to night. Poet describes the second stanza that the creatures of the Bengal bog, they do not like the harsh and unpleasant irritating sound made by a frog. Although they have done lots of things, but nothing can be affected stopping frog making sound of croaking. So the frog is here making continuous noise of croaking, can be heard easily in the Bengal bog, and this frog is sitting to the foot of the particular tree named sumac. Neither stones nor prayers nor sticks, insults or complaints or pricks. Still the frog's determination to display his hurts
elation. The literary devices are used by the poet in this third stanza, that is a rhyme scheme. Here A, B, B, and alliteration is used here, his hurts. So here in this stanza it is mentioned by the poet the work of all other creatures of Binglebog. तो सारे जो क्रिएचर्स हैं बिंगलबॉग के वो बहुत तरीके अपनाते हैं दे फॉलो डिफरेंट वेज टू स्टॉप मेकिंग द अनप्लीजेंट वॉइस नॉइस ऑफ क्रोकिंग अ फ्रॉग. They even beat it to the frog by a stone. The stick they have used insulted the frog and complained against it. And even they, means all the creatures of Binglebog, they have prayed to frog. इतना कुछ करने के बाद भी फ्रॉग पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि फ्रॉग एक प्राउड फील करता है अपनी यूनिक वॉइस के लिए. Now it is fourth stanza of this poem. But one night a nightingale, the moonlight cold and pale, perched upon the sumac tree, casting forth her melody. The literary devices are used by the poet in this stanza. These are the rhyme schemes, very simple here. Nightingale, gale, pale here. So AA and tree, melody, BB. As the poet, he introduced Nightingale for the first time in this poem of fourth stanza, so he has used a visual imagery where we are reading, while reading the lines, the poetic lines of this stanza, we feel. So in this way the poet has constructed, उसने एक image बनाया है जिसमें हम एक रीडर्स के माइंड में ऐसा लगता है कि स्काई इन दिस मून लाइट, और यहाँ पे एक नाइटिंगल आके बैठता है ऑन ए सुमैक ट्री और बहुत ही सुंदर मधुर आवाज़ मेलोडियस वॉइस में अपने सॉन्ग को सिंग करता है. और यहाँ पे अलग जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो है एलिट्रेशन, जिसमें नाइट एंड नाइटिंगल मेंशन किया गया है. सो इन दिस फोर्थ स्टंजा द पोएट हैज़ यूज्ड फर्स्ट टाइम he has introduced the character of Nightingale. So one night it was a sky which was very full of moon's light. The weather was pleasant, cold, and everything here seemed dull because of the night. So a nightingale, the bird, took place on the branch of sumac tree and now singing a melodious song. Here the fifth stanza. Dumbstruck sat the gaping frog, and the whole admiring bog stared toward the sumac, rapt, and when she had ended, clapped. Ducks had swum, and herons waded to her as she serenaded. यहाँ डम स्ट्रक मीन्स होता है शॉक होना, सरप्राइज होना. गेप मीन्स यहाँ पे है ग्लेयर करना, घूरना एक टकी. और यहाँ पे रैप्ट है मीन्स इंटरेस्ट होना आप में, अट्रैक्शन. और सेरेनेड मीन्स यहाँ पे है दैट इज sang beautifully. Now here literary devices are used by the poet here in this, that is a rhyme scheme AA, BB, CC, and another epithet is used by the poet mentioned in the fifth stanza. The whole admiring bog stared towards the having sweet and melodious voice. The nightingale has sung already, so the frog was shocked, but he was unable to do anything. He cannot speak at that moment. But other creatures of the Binglebog, जो और सारे creatures हैं, बहुत खुश होते हैं और admire करते हैं, approach करते हैं, appreciate करते हैं to Nightingale. और maximum of the creatures they clapped after ending of the song of Nightingale. और वो डिमांड करते हैं, उसमें से कुछ जो क्रिएचर्स हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से उस वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ नाइटिंगेल सिंग कर रही थी. और लास्ट में सभी एक साथ अप्लाउज करते हैं कि नाइटिंगेल फिर से एक बार वो सॉन्ग गाए. In the sixth stanza, the poet had mentioned, and a solitary loon beneath the summer moon, toads and teals and twiddlers captured by her voice cheered on enraptured. Bravo
too divine in core. So the Nightingale once more. I have already mentioned the meaning of the difficult words and the literary devices here. So I'm going to make a meaning here again. So here poet has mentioned about a water bird named loon जो बहुत इमोशनल हो जाती है लिसनिंग द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, तो वो रोना शुरू करती है. तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है बाय पोएट हियर, समर मून. दैट इज मीन्स हियर इट वाज अ समर सीजन एंड मून इज कंपेरेटिवली लोअर इन द स्काई. So creatures, they are all now cheering, listening the voice of Nightingale. Say so here they enraptured, they got fascinated and delight, saying the Nightingale that she is very brave, singing here and challenging frog. So creatures thinking that this bird, Nightingale, having melodious sound, it is given by God. It is a divine power given to Nightingale. So they all cheer to Nightingale and encore. So making here that demand to Nightingale to sing more. In this stanza, poet has mentioned, quite unused to such applause, sang till dawn without a pause. Next night, when the Nightingale shook her head and twitched her tail, closed an eye and fluffed a wing, and had cleared her throat to sing. और जैसा कि नाइटिंगेल ने कभी भी इस तरह का अप्रिशिएशन फेस नहीं किया था, एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो बहुत ही खुश होती है नाइटिंगेल हियर. शी बिकम्स वेरी हैप्पी, वेरी प्लीज्ड. नाउ शी सिंग्स फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग throughout. And here the poet has mentioned the act of a nightingale representing a poet's life, a singer's life actually. As singers जैसे किसी गाने को सिंग करने से पहले, किसी सॉन्ग को सिंग करने से पहले प्रिपरेशन करता है, कंसंट्रेशन करता है, आवाज़ सही करता है, गला सही करता है, तो सेम थिंग्स आर डन बाय हियर नाइटिंगेल. The next stanza here. She was startled by a croak. Sorry, was that you who spoke? She inquired when the frog hopped towards her from the bog. Yes, the frog replied. As the Nightingale has prepared herself to sing, she was interrupted by a noise made by a frog, that is croak. Then Nightingale inquire करती है, पूछती है to the frog that you are the person who made the voice, the sound. So it is reply given by frog that yes, it's my voice. The further one, you see, frog who owns this tree, in this bog I have long been known for my splendid baritone, and of course I wield my pen for bog trumpet now and then. The literary device is used here, personification. Here mentioned in the line, the frog has been personified as I wield my pen. And here the meaning of this poetic line, the stanza here. So frog यहाँ पे अब अपना टिप दिखाने की कोशिश करता है, शो ऑफ करने की कोशिश करता है that I am the owner of this tree on which we have taken place. So he said that he was famous in that marshy land of Bengal bog, and he quoted that he has written occasionally for a magazine named Bog Trumpet. Next one. Did you like my song? Not too bad, but for too long. The technique was fine of course, but it lacked a certain force. So what was the purpose of the poem written by Vikram Seth here? It lies here in this stanza. It is mentioned that it is a divine power given to Nightingale, seemed by other creatures of Bengal bog. Now here the frog trying to be a dominant, so he tried to overcome to Nightingale. अब वो समझाने की कोशिश करता है नाइटिंगेल को कि आप ठीक ठाक हो, आप में और सुधार हो
सकता है, ठीक है, आप में कुछ कमी है। तो ऐसा हमारे लाइफ में भी नॉर्मली होता है। कुछ लोग जिन्हें कुछ नहीं आता है वो दूसरों को ज़्यादा सीख देते हैं, इसके पीछे भी उनका अपना बेनिफिट, अपना वे होता है। तो यही मोरल ऑफ द पोएम है। देखते हैं। ओह द नाइटिंगेल कन्फेस्ड। वैसे यहाँ पे जो ओ है वो पीके मूवी का सीन है। अच्छा, तो अलग अलग टोन अलग अलग सेंस में होते हैं। इसी तरह यहाँ पे ओ कन्फेसिंग फॉर्म में है नाइटिंगेल थ्रू, सो ही इट इज मेंशन ओ द नाइटिंगेल कन्फेस्ड, greatly flattered and impressed that a critic of such note had discussed her art and throat. I don't think the song's divine. Oh, well, at least it's mine. Flattered means होता है तारीफ करना, चापलूसी करना। आर्ट यहाँ पे है जो सिंगिंग टैलेंट है नाइटिंगेल का, उसके बारे में बात की गई है। और राइम स्कीम ए ए बी बी सी सी है बिकॉज ऑफ 6 lines having this stanza. Now you can see what is the position condition of Nightingale. जो डिवाइन पावर खुद में रखती है, मेलोडियस वॉइस उसका ऑलरेडी है, वो क्या सोचती है यहाँ पे कि इसका सॉन्ग उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इस पे रिमार्क किसने किया था? फ्रॉग ने। फ्रॉग की आवाज़ आपको पता ही है कैसी है। तो नाइटिंगेल यहाँ पे मिसगाइड होती है बाय द फ्रॉग और खुद को ही इन्फीरियर समझती है। एंड after that, such a great analyzer, expert musician has mentioned, criticized, given his comment. तो नाइटिंगेल किस तरह से मिसगाइड हुई है और खुद को इन्फीरियर समझ रही है, यू कैन सी हियर थ्रू द लाइन्स। एंड पोइट ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसे एक्सप्रेस किया है, रिवील किया है। ये कंडीशन फ्रॉग और नाइटिंगेल की जो इस समय है, ये हमारे लाइफ में भी इसी तरह होती है कभी। एट लास्ट नाइटिंगेल थिंक्स व्हाट हैपेंड इफ दिस इज नॉट अ डिवाइन सॉन्ग, शी बिकम्स हैप्पी थिंकिंग दैट इट्स हर ऑन कंपोजिंग। Now move further. That's not much to boast about, said the heartless frog. Without proper training, such as I and few others can supply, you will remain a mere beginner, but with me you will be a winner. Now the frog trying to terrifying, and he is trying to say that you, the nightingale, will be little if you are not trying to learn from me. Such as me, I am the master of music and singing. You should learn, otherwise you will be a beginner whole life. In this way, the frog, without a proper and melodious voice, trying to say to melodious voice having bird, nightingale, that you are not a good one, but you should learn from me. After this, dearest frog, then this is a fairy tale, and you are Mozart in disguise. Come to earth before my eyes. The poet has mentioned Mozart. He was considered as a talented and great musician. The poet has used metaphor, allusion. The poet is trying to reveal how Nightingale is innocent. तो नाइटिंगेल यहाँ एडमायर करती है और कंपेयर करती है एक फेमस म्यूजिशियन मोजार्ट से, और कहती है कि ये एक फेरी टेल की तरह है कि आप बदले हुए रूप में मेरे सामने आए, मुझे सिखाने के लिए आए हैं। After half of the part of the poem, here now frog is mentioning, I am going to make a charge here. Well, I charge a modest fee. Oh, but it won't hurt, you will see. Now the nightingale is inspired, flushed with confidence and fired with both art and adoration, sang and was a huge sensation. So यहाँ फ्रॉग बोलता है कि मैं एक छोटा चार्ज दूंगा आपसे, आपको सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए। नाइटिंगेल बहुत खुश होती है और फ्रॉग समझाता है कि ये बहुत छोटा अमाउंट होगा, यू कैन पे, ओके। नाइटिंगेल बहुत खुश होती है, मोटिवेटेड बाय द एसेंट ऑफ फ्रॉग। और कभी कभी होता ना कि जब बुरा होना होता है तो किस्मत भी साथ देती है। तो नाइटिंगेल कुछ समय के लिए बहुत जल्दी और ज़्यादा फेमस हो जाती है बेंगल बॉग में। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? So animals for miles flocked towards the magic sound, and the frog with great precision
counted heads and charged admission. Though next morning it was raining, he began her vocal training. When the news of magical song, so lots of animals, the creatures, now gathered to the concert organized by Frog to listen to the magical song of Nightingale. So here Frog क्या करता है, पैसे बनाता है, मीन्स एंट्री फीस लेता है और बहुत पैसे बनाता है. तो नेक्स्ट डे बारिश होती है, इसके बावजूद भी फ्रॉग प्रेशराइज करता है नाइटिंगेल को कि वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करे, लेकिन नाइटिंगेल नहीं जाती है क्योंकि बहुत थक गई थी. बट आई कांट सिंग इन दिस वेदर, कम माई डियर सिंग टुगेदर, जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड शैश, को कोश कोश. आल्दो नाइटिंगेल ने मना कर दिया है, भी फ्रॉग इंसिस्ट करता है, फोर्स करता है और कहता है कि अपना हेड स्कार्फ से कवर कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और एक शैश देता है, मीन्स एक बैच देता है, क्योंकि नाइटिंगेल ने उसे ज्वाइन किया है, उसकी कंपनी को ज्वाइन किया है इसलिए. और उस रेनी बैड वेदर में भी नाइटिंगेल गाती है. सो अभी के लिए बस इतना ही. बाकी की पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट पार्ट में, उसमें समरी, थीम और क्वेश्चन के आंसर भी मिले रहेंगे और लिटरेरी डिवाइसेस जो भी यूज़ किए गए हैं और फिगर आप स्पीच, उन सबको भी मेंशन किया जाएगा इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो गाइज, आई होप आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी. आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा उसे भी मेंशन करें, और जहां भी आपको प्रॉब्लम लगता है आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते. वेटिंग फॉर योर ओपिनियन. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. बी हैप्पी ऑलवेज.